Okay. Good morning, student. Good morning, sir. Okay. Yeah, now we'll continue with your internet part. So I am sharing your screen and I complete this topic today. And then so many students are joining now. You have to come on time. आप लोग को टाइम पे आना है, याद रखो. इसलिए मैंने बोला मैं अभी एक प्रिंट स्क्रीन किया, वापस मुझे करना पड़ेगा. Okay, fine. So we will start. Welcome back. Again, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, Tybcom-V Sem. Subject is computer system and application. Topic is data communication networking. Last part it is remain in the module 1, that is internet, presented by Assistant Professor Assistant Professor Bipin Vaity. Now, internet, we have already speak about that. What is internet? It is a worldwide collection of computer network cooperating with each other to exchange the data using a common software standard. So we can collect whole data in the world, whatever is going, and we have to exchanging that data using common software, that is called internet. We have seen the types of internet connection: dial-up connection, subscriber connection, ADSL, VDSL, and wireless, and also lease line. After that, we have seen the World Wide Web. What is the concept related World Wide Web? There is a one consortium, World Wide Web Consortium, and it's a collection of the website. Many website have collections through the one language, HTML, and they have the one protocol, that is the rules hypertext transfer protocol. We have seen the website also. What do you mean website? Specific locations on the www where information and details pertaining to company individual who has put the site name, that is a unique address, and that address store the all web pages, and that's web pages we are accessing. So that is called web. So it is a collection of the web pages, and it is created by HTML language. Okay, so we have seen that we just type their domain name www.google, but Google have the one of the IP address, and that computer knows. We have seen that individual in a network system have the IP address, that is called internet protocol address. We have seen the web browser also. Web browser is a what related whatever information is a wish. So it is a one of the application where we retrieving, presenting, interacting, traversing informations on the World Wide Web. That means we are user use the application and retrieve that data, present that data, show the data, deliver the data, interacting that data. That is all part through the web browser. मतलब आपको इंटरनेट के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत है. And there are many browsers by default in Windows Internet Explorer, in Apple Safari, and other we are installing less like Firefox, Google Chrome, Opera, etc. Electronic mail, I already told about that. What is electronic mail? It is a message, whatever we are sending, just like post message we are sending electronically. It can be defined as the exchange of message and computer file between computer over a computer, and within a second we can send a message to anyone in the world. That is called electronic mail, and that is a main concept. It is a kill app. It cannot go, because this app, it is a first app we are using to send the data from one computer to another computer, and we are creating the individual email ID each and every website or link to the website with the Google. Next, blocks. I said already about that. Blocks, what do you mean blocks? Blog is a short form of the term web blog. And okay, we are just write the small informations, is a personal diary, and put up on the web, so it can share all over the world. So Twitter is the best example. An activity of updating a blog is called a blogging, and person who keeps a blog is called a blogger. Just like politician persons, we kept all the short what politicians are speak over there in the situation. So these are all the blogs we stored, and that is a blogger who keep that record. It is called blogger. Now news channels are using that blogs, and because some of the comments are coming from the blog, just like Twitter we write the blogs, and some comments coming from the opposite persons, this is a special feature of the blog visitor to a blog and can leave behind their comments. I already speak about the IP addresses. That is what IP stands for internet protocol. Individual computer have the one of the LAN ID, that is a local area network internet protocol ID. When you connect the internet, they show you the
one of the number, 4-digit number, just like that, 4-digit 123.45.0, yeah, 192.168.0.1, that is router number. After that, 192.168.0.2, that is individual number. Just like that, we can use the first 255, second 255, third 255. Just like that, we use the 255 into 255 into 255, that many computers together in the one protocols, that is called internet protocol, and it is separated by dot sign. Okay, and here the chord, four parts are there, chords, and so dotted chord notation, it is a dotted chord notation. Just like that, 123.45.067.89. So it's a mixer of the leading with we are not using any leading zeros. Just when you write 001, it erases the zero, it comes only one. Next, after that, we have seen the last part in the last lecture, that is the IP address is unique. So the conflicts, just like that, when you write your IP address in the LAN system, there are right click on the network and sharing properties. After that, we go on the adapter options, and there is a IP4, that is the version names. Now IP6 is going on. Internet Protocol 6 version software is going on. But in the IP4, when you are writing, there is a class wise it divide. Class A, Class B, Class C, Class D, Class. What is that? Class A, it is a specially used for the server, that is a 1 to 127. Now your Google server has the number like that, 127.0.0.1. So that is a first workstation. But Google is server has not a only one computer. There are the many workstation. So they can use the 127.0.02, 0.3, 0.4, like that number. And it is in the all server. So that's why it is a class A. Class B, also proxy servers we are using over there. Some of the PC become down, just like that server error is there. And that's why we have to use the other PC to work for the server. So that is a proxy server. That is 128.190. Just like that, internet, BSNL provide the internet, and VCPL or cable network, they are using the proxy server, and they create their own server and they distribute your internet. So that is class B, 128 to 191. And our class, that is client computer using 192 routers se leke, our computers are 192 to in the 223 class C. And other, mostly in the, we can see in the mobile DHCP protocol, that is a dynamic host control protocol is there, and that is using that class D and E. So all are included in the 255 numbers. So first of all, we start with the 127.0.01 or 1.0.01. So this is the locations, how many computers we can join at a time. First 255 dot, second 255 dot, third 250, and continue. So this way we can joining in the one network system, in the one LAN system, and connect with the internet. So that is IP address is a unique. Each computer have the individual IP address, one IP address, only one connection on the internet. Two devices on the internet can never have the same address. That's why if a device has a two connection to the internet via two network, so it has a two IP address. अगर आपने दो LAN को भी connect किया तो उसका IP address conflict होगा, उसका IP address आपको change करना पड़ेगा. But we are keeping always automatically. It is in the range from 1 to 255. तो वो अपनी आप इंटरनेट से अलग नंबर ले लेता है. बट अगर आपने अपने खुद के लैंड सिस्टम के लिए इंडिविजुअल आईपी एड्रेस स्पेसिफाई आइडेंटिफिकेशन किया होगा कि मेरा पहला पीसी फर्स्ट नंबर इज 192.168.0.1, सेकंड पीसी 0.2, थर्ड पीसी 0.3, तो वो स्पेसिफाई एड्रेस अगर मैंने तीसरे चौथे पीसी में सेम डाला तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा. दैट इज व्हाई देयर इज अ we cannot use the same address IP address in the another PC. Got it? Yes, student. So Yes, this is sir. revision Yes, part. sir. Last lectures I completed that part. Now we will continue. Your internet part is a domain names. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये नंबर हम लोग को कंप्यूटर में होता है. वी आर टाइपिंग जस्ट www.microsoft.com, www.google.com, and it converts into one of the number. Just like that, they are showing you there www.microsoft.com, and that IP address is there 157.45.60.81. So this is domain name system. आप ये नंबर याद नहीं कर सकते, बट नाम याद कर सकते हो, वो भी यूनिक.
माइक्रोसॉफ्ट करके एक नाम दिया हुआ है डोमेन नेम, वो यूनिक होता है, वो दूसरा नाम नहीं है। गूगल गूगल करके दूसरा साइट हम लोग नहीं बना, हाँ हम लोग गूगल 1, गूगल 2, गूगल 3 या अलग नेम देके we can purchase the domain and we can create. So the domain name system was developed in 1984 by Paul Mockpedis. So every number on the internet has a unique IP address, but this number has difficult to remember. So you have to imagine if you have to call your friends by their mobile number, so instead of their names, अगर हमने हमारा कॉल नंबर मोबाइल नंबर बाहर कर देंगे तो भी हम लोग याद नहीं रहेगा, एक आध नंबर हमारा इधर उधर हो जाएगा। बट अगर हम लोगों ने नाम याद रखा, नाम से हमारी पास डायरी बनाए, कॉन्टैक्ट नंबर बनाए, तो नाम से याद कर सकते, ए नाम से चालू होने वाला, बी नाम से स्टार्ट होने वाला, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट देयर मोबाइल नंबर एंड वी कैन इजीली कॉल। सो इट विल बी इम्पॉसिबल, द डोमेन नेम इज द नेम दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ एन आईपी एड्रेस। मतलब डोमेन नेम इज अ कंप्यूटर नेम। एक डोमेन नेम क्या होता है? कंप्यूटर का नाम होता है, जो सर्वर होता है, वेब सर्वर का नाम है, और वो आईपी एड्रेस हो। हम लोग आईपी एड्रेस टाइप नहीं कर सकते, हम लोग नाम टाइप कर सकते, इसीलिए हम लोग एड्रेस बार में गूगल लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो आईपी एड्रेस ही फाइंड आउट करना, तो गूगल नाम से वो आईपी एड्रेस में कनेक्ट होता है और आईपी एड्रेस के थ्रू आपका वेब सर्वर स्टार्ट होगा। गॉट इट? व्हाट इज डोमेन नेम? सो दिस इज डोमेन नेम सिस्टम, कि आप आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम लोग गूगल www.google, पहले तो हम लोग पूरा लिखते थे http://www. अभी तो खाली नाम लिखा तो भी ब्राउजर को मालूम है, बिकॉज ब्राउजर इज सो क्लेवर नाउ। गॉट इट? क्लियर? हेलो? या Yes, sir. Yes, sir. next, so they are given domain name system is a DNS short form. It is an internet service that translate domain name into IP address, because domain names are alphabetic and they are easy to remember. So that's why internet is however based on IP address. लेकिन इन पूरा इंटरनेट किसके ऊपर डिपेंड है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के ऊपर। गॉट इट? प्रोटोकॉल इज अ रूल्स, ये इंटरनेट के रूल्स है, वो रूल्स फॉलो कर रहा है। नाउ लोकेशंस ऑफ द फाइल, अगर हम लोग पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हैं तब उसका यूआरएल आता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईच वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक कंप्यूटर का एक इंडिविजुअल एड्रेस होता है, राइट? तो हम लोग डोमेन नेम लिखते हैं, जैसे http://www.economic-times.com। ये इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज़पेपर का साइट है। बट अगर पर्टिकुलर index.html, वी कैन सी दैट index.html, इट इज अ फाइल नेम, तो उस वेबसाइट में ये फाइल उस पीसी में, उस वेब सर्वर में स्टोर हो रहेगा और वो फाइल एक्सेस हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड फुल पाथ ऑफ दैट लोकेशन, इट्स कॉल्ड द यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड दे डिवाइड इनटू 3 पार्ट, एक प्रोटोकॉल पार्ट, फिर होस्ट पार्ट और एक डॉक्यूमेंट पार्ट। जैसे http:// टेल द वेब ब्राउजर दैट इज इट इज मेकिंग द वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्शन, यानी कि ये वेबसाइट वाला साइट है। यहाँ अगर FTP आया, FTP:, तो हम लोग समझ जाएंगे दैट इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब फाइल अपलोड या डाउनलोड हो रहा है। ओके, सो HTTP it is different, FTP it is different. So it tells the web browser which type of the web connections are there. वेबसाइट का कनेक्शन है, फाइल का कनेक्शन है, VPN का कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन है। So HTTP is the abbreviation of the hypertext transfer protocol. वैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है, FTP, ओके, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है, वो देखने। सो दैट इज प्रोटोकॉल। इसलिए तो लोकेशन HTTP से, प्रोटोकॉल से हम लोग को पता चलता है कि ये वेबसाइट कनेक्ट कर रहा है, कि फाइल कनेक्ट कर रहा है, कि VPN कनेक्ट कर रहा है, कि क्या कर रहा है। After that, we are seeing that host part, that is your www.economics-times.com. It is a location of the web server, that is the computer on which the web page are stored. जहां पे पूरा वेब पेज स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं www.economic-times.com। इसका मतलब, अभी ये इकोनॉमिक्स मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो www वर्ल्ड वाइड वेब डॉट सेपरेटेड, फिर डोमेन का नाम डॉट और कॉम क्या बता रहा है? नॉन जोग्राफिकल डोमेन। जोग्राफिकल होता तो क्या देते थे पहले? .com.in, मतलब क्या? .co.in, कोऑपरेटिव इन इंडिया, .uk यूनाइटेड किंगडम, .au ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? तो दैट इज अ जोग्राफिकल डोमेन और नॉन। अभी कॉम मतलब कमर्शियल साइट, .gov मतलब गवर्नमेंट साइट, तो .gov.in मतलब गवर्नमेंट इन इंडिया, ओके, gov। फिर आपका ORG ऑर्गेनाइजेशन साइट, MIL मिलिट्री साइट, एजुकेशनल EDU इज अ एजुकेशनल साइट।
तो दिस आर ऑल द इंडिकेट दैट डोमेन कोड, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा टाइप का आपका साइट्स ओपन हो रहा है, कमर्शियल, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट, मिलिट्री और एजुकेशनल रिलेटेड. So index dot, after that index.html, that is document part, slash and your file name, जिसमें वेब पेज स्टोर होता है. फर्स्ट पेज इज ऑलवेज HTML, so that is it shows you कि इंडेक्स फाइल का नाम है, लेकिन .html वेब पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज इज ऑल्सो home page. So it is a file name of the web page that you are trying to access. So usually this is the default page loaded by the browser when you enter a website, and this is called home page. जब भी आप वेब पेज ओपन करते हो तो पहला पेज जो ओपन होता है वेबसाइट पे, उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं इट इज अ होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट. क्लियर? URL समझ में आया? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ सर्च इंजन. अभी सारे वेब सर्वर होते हैं. हमारा कॉलेज का वेबसाइट है, आपको पता होगा, आपका कॉलेज के वेबसाइट यूज किया है क्या आपने? हेलो? किया है. ओके, वेरी गुड. सो वो नॉर्मल वेबसाइट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओनली वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर कॉलेज इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स आपको खाली इंफॉर्मेशन शो करनी है, और इंटरेक्टिंग पार्ट जैसे एडमिशंस या नोटिस या गैलरी या फोटोज, इवेंट्स वगैरह हम लोग को डालना है, तो हम लोग वो वेबसाइट को यूज करते हैं, राइट? बट सर्च इंजन इज डिफरेंट. दिस आर द वेबसाइट्स. इट अलाउज द यूजर टू फाइंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट थ्रू द कीवर्ड सर्च, जस्ट लाइक गूगल सर्च. आप गूगल में देखते हो कि होम पेज में कुछ नहीं रहता है, उधर सर्च इंफॉर्मेशन रहता है. तो सर्च इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गो ऑन दैट सर्च, क्लिक, एक कीवर्ड लिखते हैं, मुझे HSC रिजल्ट चाहिए, मुझे SY-BCom रिजल्ट चाहिए, मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट चाहिए, तो आप क्या करते हो, वो कीवर्ड से सर्च करते हो. सो इट अलाउ द यूजर टू फाइंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट थ्रू द कीवर्ड सर्चेस. इसको कीवर्ड सर्च बोलते हैं. If you have to search for, say, informations on monuments, then just typing monuments will result in thousands of sites. आपको बहुत सारे थाउजेंड ऑफ साइट्स आते हैं, नीचे पेज नंबर आता है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और लिंकिंग पेजेस आर देयर. यानी कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे हम लोग जंप कर सकते हो. दैट इज लिस्टेड वेबसाइट, इट शोज थ्रू द सर्च इंजिन्स. सो इफ यू नीड इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द मोन्यूमेंट्स इन इंडिया, अगर आपको इंडिया चाहिए तो आप आगे लिखते हो इन इंडिया, इन साउथ इंडिया, तो आप पर्टिकुलर रहते हैं. तो एंटरिंग द कीवर्ड्स मोन्यूमेंट साउथ इंडिया विल रिजल्ट इन मोर फोकस सर्च. तो और सर्चिंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है, कीवर्ड सर्चिंग चालू होता है. HSC रिजल्ट इन मुंबई यूनिवर्सिटी, इन मुंबई बोर्ड. ओके, तो आपको उस तरह. सो सर्च इंजिन इज टूल दैट सर्चेस फॉर वेबसाइट बेस्ड ऑन वर्ड्स. वो वर्ड के ऊपर डिपेंड होता है. दैट वी गिव, जैसे आप लिखना चालू करते हो, वो आगे आपको हाईलाइट करता है. इट गिव्स यू प्रोग्रेस कि आपने ये वर्ड टाइप किया, इसके आगे के वर्ड्स ये है. तो दैट वी गिव अ सर्च टर्म्स. सो सर्च इंजिन लुक थ्रू देयर ओन डेटाबेस. उसका सर्च इंजिन में, वर्कस्टेशन में, वेबसाइट में, हाँ, यानी कि गूगल के पास सारे जितने नए वेबसाइट बनते हैं, उसका एड्रेस किसके पास स्टोर है? गूगल. सो वो अपना डेटाबेस बनाता है, और उस डेटाबेस में नए वेबसाइट को स्टोर कर लेता है, उसका IP एड्रेस स्टोर कर लेता है. तो आप जितने भी सर्चिंग के ऑप्शन उसके अंदर सर्च करते हो, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो डेटाबेस स्टोर होना चालू होता है. तो इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट इट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर, इसलिए हिस्ट्री भी स्टोर होती है. आप जो जो सर्च करते हो ऊपर हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपने एड्रेस बार में वो नाम डाला तो अपने आप वेबसाइट ओपन होती है. दैट इज कॉल्ड सर्च इंजिन. नाउ यू गॉट इट. This is also web server, but it is a first, that is we can say that is searching tools. These are searching website. आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट, इसके लिए गूगल है, खोज.com है, याहू है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो खाली आपको सर्च इंजिन का काम कर रहे हैं. गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? आफ्टर दैट मेटा सर्च. अभी देखो, सर्च और मेटा सर्च. मेटा सर्च इज एन इंजन सर्च टूल दैट डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डेटाबेस. इसमें खुद का डेटाबेस स्टोर नहीं होता है, बट इंस्टेड सर्चेस दोज ऑफ द अदर इन. यानी कि मैं भी क्या करूंगा, गूगल का लिंक दे दूंगा और आपको बोलूंगा, आपको सर्च ऐसा टूल बनाऊंगा, आप उधर सर्च करोगे, तो मेरे वेबसाइट से सर्च कर रहे हो. सो दैट मीन्स वी आर सर्चिंग फ्रॉम माई वेबसाइट टू गूगल वेबसाइट. ओके, मतलब मेटा सर्च वो स्टोर नहीं, अपना मेरा खुद का डेटाबेस नहीं है, मैं एक वेबसाइट का हेल्प ले रहा हूं जो सर्च करने के लिए काम आ रहा है. दैट इज अ गूगल सर्च और व्हाटएवर. तो इसको बोलते हैं मेटा क्रॉलर और डॉकपाइल.
और इंस्टेंट सर्च द डेटाबेस फॉर ईच ऑफ अदर सर्च इंजिन। जो दूसरे सर्च इंजिन है उसके थ्रू हम लोग हमारे इसमें डेटा सर्च कर रहे हैं। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी पे आपको रिजल्ट सर्च करना है तो उसने भी लिंक देके रखा है गूगल में, ताकि आप गूगल से भी लिंक ये मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट को लिंक कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वेबसाइट। तो ये क्राउलर है, इसको बोलते हैं मेटा सर्च इंजिन। गॉट इट? समझ में आया? सो दिस इज लिकॉस, वेब Yes, sir. क्राउलर, एक्साइड, अल्टा विस्टा, याहू, इस तरह के जो सर्च इंजिन है वो मल्टीपल डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। सो यूजिंग मल्टीपल डेटाबेस विल मीन दैट सर्च रिजल्ट्स आर मोर कॉम्प्रहेंसिव but slower to obtain. Advantage of using that meta search is that user does not have to type the same query. यूजर को वापस वो टाइप करने की जरूरत नहीं। इट्स सेपरेटली इन डिफरेंट सर्च इंजिन। हम लोग को वो सर्च इंजिन में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। आपने जो हिस्ट्री स्टोर की हुई रहती है वो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होती है। आप वापस अगर उसके पास लिंक करोगे, जैसे यूट्यूब का लिंक आपने एक सर्च किया कि उसके रिलेटेड डेटा अपने आप आता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटा सर्च। आपने यूट्यूब में डालो, आप रिलेटेड सॉन्ग्स, रिलेटेड वीडियो, रिलेटेड पिक्चर्स आप डालोगे तो उसके रिलेटेड बहुत सारे जितने भी वीडियोस क्रिएट हुए हैं वो सारा लिंकिंग होगा, उसको बोलते हैं मेटा सर्च। गॉट इट? नेक्स्ट, साइबर क्राइम। अभी of course when you are using internet, important part, honestly reliable we have to use the internet. मिसयूज भी होता है इंटरनेट, आपको भी पता है कि इंटरनेट से बहुत बैड थिंग्स है। इसलिए साइबर क्राइम कि किसी का बैड इंटेंशन है, इसकी वजह से उन्होंने इंटरनेट का यूज करके उन्होंने क्या किया, दूसरे को इंटरप्ट किया, दूसरे को डेटा करप्ट किया, दूसरे की चोरी की, वॉट एवर, दिस इज ऑल क्राइम। तो इट इज बैड इंटेंशन। तो इंटरनेट का यूज अच्छा करोगे तो इट इज गुड, बट अगर बुरा करोगे तो वो क्राइम है। तो इसलिए उन्होंने रेफर किया है साइबर क्राइम। इट